हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो और नए प्लेलिस्ट में। आज हम सीखेंगे MongoDB। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। MongoDB comes under the umbrella of NoSQL databases। what is exactly this? ये क्या होता है, पहले ही जानते हैं। NoSQL stands for not only SQL or simply not SQL। तो SQL अगर आपको पता हो तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है जो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेसेस में यूज होता है। इसका कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता। सो इफ यू टॉक अबाउट नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, सो देयर इज नो स्कीमा, सो देयर इज नो फिक्स्ड कि ये मेरी कॉलम्स है या फिर ये मेरे एट्रीब्यूट्स है। इट कैन बी एनीथिंग। इट इज लाइक मोर मोर लाइक एन ओपन थिंग। इन रिलेशन डेटाबेसेस वी सी दैट देयर इज अ फिक्स्ड स्कीमा कि आपका ये टेबल होगा, उसके ये कॉलम्स होंगे, उसमें ये वैल्यूज आएंगी। बट दैट इज नॉट द केस इन नो एसक्यूएल डेटाबेस, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि आप कभी भी अपने डेटा टेबल को ट्यून कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। One more benefit is easy to scale. So we can easily scale up. Scale up means कि आप उसको कभी भी बढ़ा सकते हो without any issues of space and such things, और also compatibility का जो issue आता है। Also, it is easy to store these kinds of databases in a distributed manner. Uh, अगर हम और एक बड़े अम्ब्रेला की बात करें जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होते हैं, so it is easy for NoSQL databases to store in a distributed manner। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का अगर पढ़ोगे तो उसमें NoSQL एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। ऑल्सो अगर हम उसको रियल टाइम सिनेरियो में देखें तो आजकल की जितने भी रियल टाइम एप्लीकेशन है लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो दिस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन जनरेट्स अ लॉट ऑफ डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस। इवन अगर आप एक आवर का डेटा भी ले लो तो दैट इज वर्थ gigabytes and petabytes of data that is generated on a daily basis, in an hourly basis। So इन सब डेटा को हमको अगर स्टोर करना है इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, बिकॉज आप इतना एक सिंगल सेंटर तो नहीं बना सकते जहाँ पे इतना सारा डेटा एक साथ स्टोर हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस आपको नो एसक्यूएल डेटाबेसेस यूज होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात कर ले, क्या नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के टाइप्स हैं, तो बेसिकली चार बड़ी कैटेगरीज है इसमें। तो फर्स्ट इज कॉलम बेस्ड। हियर we'll have a table in rows and columns form, in which the columns are used as the main pivot। Then comes the graph based techniques। Graph based, in this particular thing, all our data is arranged in a form of a graph, and this looks something similar like this। Then comes document based। Document based is simply, if you can say, we have a document which is considered as a record, and a set of documents does becomes a collection or a database, right? And then at the last, it is key value pair based databases of NoSQL। So in this, as the name suggests, we store each and everything as a key and value pair। So here a single key value pair is a record। So record in the sense एक entry data की, ठीक है। So what in this tutorial we are focusing on is MongoDB, and MongoDB comes under this document based NoSQL databases। So that's what we are focusing on। There are other databases like the Cassandra and CouchDB and etc. But we are focusing on MongoDB, which is document based। So that's all in this introduction video।